morning, dear students. I hope you all are fine today. So let us start with our next lesson, and that is some natural phenomena. So you have seen हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे phenomenon होते हैं. There are various things which are happening all around us and which are natural, which happens naturally. So we will just see few of them, and specifically we are going to see two natural phenomena and the reason behind that, that is the lightning and earthquake. So lightning and earthquake, you see, these are very sudden and they all are natural. तो वो कैसे होते हैं, how do the lightning occur, how do the earthquake occur? So about that we are going to see in this lesson. So first let us define that what is lightning. It is the streaks of bright light and sound which is caused by electric discharge between the clouds and earth or between different clouds. Now see, in this definition we have come across a term, that is electric discharge. Now what exactly is this electric discharge? So that is what we are going to see in this lesson. First we'll understand the concepts, and then we'll go to actually see how does this phenomena occur. Okay, and the next one is earthquake. So it is also a sudden shaking or trembling of the earth caused by the disturbances deep inside the earth's crust. So these are the definitions, and yes, I would explain the definitions, but before you have to understand certain concepts related to that, then and then only you will understand this definitions and the phenomenon, like how do they occur. And also we know that they cause a lot of damage to the human life and also to the property. So it is very necessary to know the nature of these and how to do when that occurs. So let us start with some of the concepts. So let us see first charging. Okay, you have learnt about the friction. Okay, we had a lesson called friction. Now friction produces a charge. If I say like this, yes, friction do produce a charge. That means, see, some objects when you rub against each other, they will produce a charge. A charge will be produced on that object. That means you must have observed that when you rub a scale on your head or when you comb your hair, okay, and then if you try to take that comb or that scale whatever near the pieces of paper, you would observe कि वो जो comb है या scale है वो उन pieces को attract करेंगे. Why? Are they magnets? No, still they attract. Then why? So the thing is, they get charged. The scale and the comb, they get charged because you are rubbing it with your hair. There is a friction between both, right? That friction will induce a charge in them, and that charge is responsible to attract the pieces of paper. Okay, so another example we can also take like I said, the scale, a plastic scale or a comb, or you can also take a plastic refill. So if so these are the things which will so actually they will attract the paper. क्यों attract करते हैं? As I said, because they get charged, they have charge and hence they attract the pieces of paper. अब ये जो charge होता है, and we know the types of charges and all that we will see, but these charges are stationary. That means they will not move from one place to the other place like the electrons do. If the charge moves from one place to other, then that will cause a current to flow, right? You have learned current is nothing but a flowing charge. A flowing charge produces a current. लेकिन ये जो चार्ज है वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाता. ओके, दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड वो उसी एरिया में रहेगा. इफ़ यू सी, कोम्ब का जो पोर्शन आपने रब किया था आपके हेयर पे, वही पार्ट विल अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ पेपर, दूसरा पार्ट अट्रैक्ट नहीं करेगा. सो दैट इज द स्टैटिक चार्जेस. ओके, बिकॉज these charges are stationary, they do not move, they belong to that specific area only, hence they are called as the static charges, and this is also called as a static electric charge. Okay, this is called as the static electric charge. This is the concept which you want to learn. Okay, now let us see the next. See this balloon also, yes, you must have observed balloon also, it attracts the hair, and now in winter season you see the hair gets attracted to even the clothes. If you wear some cloth other than cotton, then that will attract your hair, right? Also the balloons and all, many things are there.
सो द थिंग इज जो चार्जेस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, you know, positive charge and negative charge, and this you know very well. Like charges will always repel each other while unlike charges will always attract each other, right? तो दो ऑब्जेक्ट जो आपने एक दूसरे के साथ रब किए हैं, एक ऑब्जेक्ट पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे कोई भी दो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज इफ यू ब्रिंग देम क्लोज, बोथ पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज, दैट मीन्स बोथ आर सेम, so they will repel each other, and the charges which are different, opposite, they will attract each other like it is shown in the diagram. Okay, then if you want to see with an activity whether the like charges repel each other, let us do an activity. What we need to do, we have to just inflate two balloons. We have to take two balloons and inflate them, blow करो उसमें हवा and just inflate them, then hang them such that वो एक दूसरे को टच ना करें, they should not touch each other, उसको थोड़ा सा दूर हैंग करना है। then rub both the balloons with a piece of woolen cloth, wool का क्लॉथ लेना है, उस क्लॉथ से rub both the balloons you have to rub against the woolen cloth, and then what do you observe, वो बलून को रब करके ऑफ कोर्स उस फेस पे रब करना है जो एक दूसरे के टुवर्ड्स पॉइंट करे। ओके, एंड देन यू जस्ट लीव द बलून्स, व्हाट यू वुड ऑब्जर्व, the balloons will repel each other, they will actually, you can see, you can observe, balloons go far from each other. Okay, क्यों? क्योंकि आपने दोनों balloons ये है same material and you have rubbed it against the wool, that is also same material, दोनों same material को एक दूसरे के against आपने rub किया है, तो of course same charge develop होगा। ओके, which charge? ओके, और तो हमको पता नहीं है कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, बट वी कैन श्योरली से कि दोनों बलून पे सेम चार्ज है। वाई? बिकॉज दे आर रेपेलिंग ईच अदर। दिस क्लियरली शोज दैट बोथ द बलून्स आर चार्ज्ड बट द चार्ज इज सेम ऑन बोथ। ओके, देन द सेकेंड एक्टिविटी, सो इन दैट वी हैव टू टेक अ प्लास्टिक refill एंड रब इट अगेंस्ट ए पॉलीथीन बैग। तो एक प्लास्टिक की रिफिल लेनी है, उसको बस पॉलीथीन के अगेंस्ट रब करना है एंड कीप इट इन अ बीकर और कीप इट इन अ ग्लास। और फिर दूसरी लेनी है प्लास्टिक, वी हैव टू टेक सेम मटेरियल एंड रब इट अगेंस्ट द सेम मटेरियल। ओके, क्योंकि क्यों करना है ये सेम मटेरियल, बिकॉज हमको सेम चार्ज चाहिए, दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आर वी टेकिंग सेम मटेरियल वेरी शॉर्टली। फिर हमको दूसरी रिफिल लेनी है, उसको भी पॉलीथीन के अगेंस्ट रब करना है और फिर ब्रिंग बोथ द रिफिल्स नियर टू ईच अदर, अगेन दे विल रेपेल। So here I am repeating again because we have used same material. Now the thing is, if we want to see unlike charges will repel each other. तो अभी ये जो बलून था हमारा, राइट, हमने बलून लिया था और एक इसमें हमने क्या ली थी, रिफिल ली थी। अब ये दोनों को अगर हम साथ में लाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को रेपेल करेंगे। Now what does it show? कि both are oppositely charged. बलून का चार्ज एंड रिफिल का चार्ज अपोजिट है, and hence they are attracting because opposite charges attract each other, right? So this is how we show like charges will always repel each other and unlike charges will attract each other. Okay, now the charges acquired by different objects. तो अभी हमने देखा कि okay, charge to attract like they acquire the charges, but कौन सा object कौन सा charge acquire करेगा, because there are two types of charges, one is positive, one is negative. तो हमको पता कैसे चलेगा, सो दैट वी विल सी। बट बिफोर दैट, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हमने एक ग्लास रॉड लिया और उसको सिल्क के अगेंस्ट रब किया। ओके, जो लास्ट वाली है राइट साइड एक्सट्रीम फिगर, सो एंड दैट यू सी अ ग्लास रॉड इज रब्ड अगेंस्ट दी सिल्क। ओके, तो वो जो ग्लास रॉड होता है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। दिस इज फिक्स्ड। इफ यू रब अ ग्लास रॉड विद दी सिल्क, then that gets the glass rod gets a positive charge, the glass rod gets a positive charge. Or if you take a plastic rod and you rub it with a fur, then that will get a negative charge. ग्लास रॉड है विद अ पॉजिटिव चार्ज एंड प्लास्टिक रॉड है विद अ नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों रॉड को साथ में लाया तो of course they will repel, they will attract as they are differently charged. So that is shown over here in the figure C. Then you bring them close, they will attract each other, the arrows are shown towards each other. So हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव आएगा चार्ज, कौन से ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव आएगा?
सो देर इज़ अ फ्रिक्शनल ऑर्डर, इसमें है कि यू सी वुल, फ्लैनल, फर, सीलिंग वैक्स, तो ये सारे जो मटेरियल्स है जिन पे चार्ज आ सकता है तो वो अरेंज किए गए हैं इन एन ऑर्डर, राइट. सो इफ़ यू सी इन दिस सीरीज, इन दिस ऑर्डर, जो सबसे ऊपर है they will always get positively charged. Say for example, see the first one wool, second one is flannel. So when you rub wool and flannel, that time the wool will always gain positive charge. क्यों? क्योंकि वो flannel से ऊपर है. Are you getting? So see the first wool and the last one, that is plastic. wool and plastic को अगर rub करोगे तो wool will get positive charge and plastic will get negative charge. So the thing, the object material which is above will gain positive charge and which is below will always gain a negative charge. So this is very clear to us, so we can remember, right, which will get positive and which will gain negative charge. So I hope this is clear to you. Now if we want to check whether the object is charged or not, so how will we check? So there is a simple instrument which is like used to see whether the object is charged or not, and that is the electroscope. And we can easily make this electroscope at home. What we need to take, we just have to take a bottle, एक bottle लेनी है जिसको we can close, okay. Then we can take an empty bottle, a piece of cardboard, a paper clip and 2 small strips of aluminium foil, which is very easy to get. तो ये सारी चीज़ें लेनी है. And what we need to do, we have to like pass one end of the paper clip through the cardboard, क्योंकि cardboard हमने क्या किया है, बॉटल को ऊपर फिट कर दिया है. एंड देन यू इंसर्ट द क्लिप इनसाइड द कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड के अंदर क्लिप गई और उस क्लिप को दोनों एल्यूमिनियम फॉयल उसके अंदर डाल देनी है एज इट इज शोन इन द डायग्राम, ओके, जो साइड में डायग्राम बताई गई है उसमें. सो दीज आर 2 एल्यूमिनियम फॉयल. और हमको क्या करना है, जब भी वी टेक एनी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट नियर, वो जो ऊपर पिन का जो ऊपर थोड़ा सा पार्ट है उसकी तरफ, वेन एवर यू विल ब्रिंग एनी ऑब्जेक्ट नियर टू दैट थिंग, सो यू सी वो जो दोनों एल्यूमिनियम फॉयल से दे विल रेपल, दे विल गो लाइक दिस, दे विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर. You see, like so you can see here in the diagram, if we want to see how the charges get transferred, so as I said, they will go away from each other, and this method is called as the charging by contact or conduction. क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि हमने वो जो ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पे ये प्लास्टिक का रॉड है, उसको वी हैव एक्चुअली टच टू दैट पिन. कैसे भी बना सकते हैं, यू कैन आइदर यूज़ अ पिन और यू कैन यूज़ अ कॉपर लाइक दिस. कॉपर का जो एक वायर लिया है, दैट कैन बी मेड एनीथिंग यू कैन यूज़, दैट शुड बी अ कंडक्टर, दैट इज द थिंग, इट शुड बी अ कंडक्टर. तो जब व्हेन वी ब्रिंग दैट चार्ज्ड ऑब्जेक्ट नियर टू द इलेक्ट्रोस्कोप, जब टच करेंगे तो क्या होता है पता है, वो जो हमारा चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है उसका चार्ज के ट्रांसफ़र टू द इलेक्ट्रोस्कोप, वो पिन को जाता है या फिर यहाँ पे कॉपर को जाएगा, एंड देन इट विल गो टू द एल्यूमिनियम, बिकॉज दिस ऑल आर कंडक्टर, वो एल्यूमिनियम तक जाएगा. एंड यू सी बोथ द एल्यूमिनियम फॉइल्स विल गेट द सेम चार्ज. जो चार्ज अपने उस मटेरियल पे है, सेम चार्ज विल गो, इट विल फॉलो डाउन, इट विल गो टू बोथ द एल्यूमिनियम फॉइल्स. एंड इफ यू सी both the aluminum foils are getting same charge जो कि उस मटेरियल का है, so you see same charge, so they will repel each other. So if they are repelling each other, it means ये जो ऑब्जेक्ट हमने उसके नज़दीक लेके गए हैं, that is charged. अगर वो चार्ज नहीं है तो the aluminum foil will never go away from each other, they will not repel. They repel because they get charged, and they get charged by the same, like they have same charge, hence they repel each other. So this is the simple way to see whether the object is charged or not. और हमने एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को भी चार्ज किया है by touching it, like when we bring it close, right? So this is called as charging by contact or by conduction. The first one, when we rub, that was charging by friction. जब हम चार्ज करते हैं something, when we are rubbing the glass rod with a wool, so we are actually rubbing and creating a charge, so that is charging by friction. This is charging by conduction. So in this way we can charge various objects in various ways. Okay, you can see here in the animation the negative charge. अगर हमने negative charged material लाया तो the aluminum foil will get negative charges and they will go away from each other, and same is the case with the positive charge. Okay, अगर वो चार्ज नहीं है तो they will not go away from each other.
And yes, this is the main concept. Now we will go to the main topic, but for now this much. So till that time, you take care of yourself, stay safe, stay home. Goodbye.